बोलोगे श्यामल सर बायोलॉजी पेपर के पहले आप कैसे आ गए? Actually, all the credits to our biology teachers. They have helped me, and instantly I will just quickly share the biology importance. Yes, okay, fine. So let's begin with biology importance. 10 मिनट सुन लो और फिर पढ़ो. अरे जब थोड़ा बहुत importance हम लोग को पता चलता है कि हाँ या over the period of time these questions might come, we can definitely share it to you ना for the benefits. First, genetics में what are you going to do for tomorrow's exam? First thing, definitions. फर्स्ट कंप्लीट द डेफिनेशंस, जितने भी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी होल इट्स गोना बी यूजफुल आउट देयर ऑल्सो. देन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो केस स्टडी करके जाना है भाई, केस स्टडी इन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, ऑलराइट गाइस. एंड लास्ट थिंग फॉर दिस चैप्टर, लेट मी राइट ना, इनहेरिटेंस. I was a bio student only, okay? तो आता है मेरे को भी, ऐसा मत करो. हाँ. Then there are 3 laws. 3 में से I am expecting 1 law to be asked tomorrow. 1 law for sure out of 3 laws. That's it. Focus on genetics and chromosomes में all these things. Alright, fine. The second thing which we are talking about, very important. Next chapter is called absorption. From absorption एंड ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ऐसा है ना कि अब्जॉर्प्शन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपिरेशन की विल बी टेकन केयर ऑफ. ट्रांसपिरेशन अगेन आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द डेफिनेशंस, क्योंकि डेफिनेशंस विल क्लियर आउट योर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो एंड थोड़े कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. एंड फोकस ऑन लास्ट 3 पेजेस. बस लास्ट के जो 3 पेजेस के जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, हाँ वो इंपॉर्टेंट है. Last 3 pages experiments, their conclusions and in depth. बस that's all I can explain or expect from here. Right, देखा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए ताकि तुम लोग का 3 घंटे में सब हो जाए, 9:30 से लेकर अप्रॉक्स 12:30 तक. Then I am talking about photosynthesis. अच्छा, photosynthesis में I am expecting last 2 experiments में से एक एक्सपेरिमेंट. लास्ट 2 जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, लास्ट 2 पेजेस, लास्ट पेज पे या सेकंड लास्ट पेज पे है, लास्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स में से एक आने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड जस्ट डू द लाइट एंड द डार्क रिएक्शंस. लाइट एंड द डार्क वाले जो एक्सपेरिमेंट के रिएक्शंस हैं, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस. एंड डायग्राम में जस्ट डू द डायग्राम ऑफ chloroplast and root hair. That's all. Cut short guys, cut short for the importance which I am giving from my perspective. Right. Fourth, let me change the color ना, ये लाइफ में कलर होना चाहिए है ना, तुम लोग है ना समझते नहीं हो. Fourth, okay, now talking about the next is chemical coordination. Chemical coordination, I want you to do hormone chart. बस hormone का एक चार्ट है. I want you to just learn that hormone chart, nothing else. And thigmotropism is what you're gonna just learn and go. Alright, if I proceed further, giving you some important characteristics or question answers which can appear for tomorrow's exam. In circulatory system, all right, in circulatory system, I want you to focus on double circulation. Okay, double circulation, that's systole and diastole wala concept. And observe pictures in the textbook. Textbook के pictures बहुत clearly observe करना. And second, spleen and hepatic portal system. The spleen wala part and hepatic, it's a simple chapter, but just hepatic portal system. Great guys. Then in the next part, which is your excretory system, very simple chapter. Excretory system, I want you to pay attention to the disorders. Yes, very important. And urine regulation and urine formation. बस इतना करके जाओ कल अभी. Urine regulation
and urine formation. Great going, great going. Thank you, Shamal sir. I know, thank you. My bio teachers are very helpful. The next one is endocrine. एंडोक्राइन इज अ 4 पेज का चैप्टर यार, ठीक है, उसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है, वो एक बार देख के जा. आई एम नॉट राइटिंग अबाउट एंडोक्राइन. द नेक्स्ट इज नर्वस में जस्ट डू 3 थिंग्स. स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन. नर्वस में आई वॉन्ट यू टू डू द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट, द रिफ्लेक्स एक्शन, उसके डायग्राम्स. मेरे ख्याल से रिफ्लेक्स एक्शन के 2 डायग्राम्स हैं, एक तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंड द रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट करो एंड गो फॉर टुमारो मोर थॉरली. देन आफ्टर नर्वस द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स में ऑल्सो आई एम गोइंग टू रिकमेंड ओनली 3 थिंग्स फॉर द लास्ट मिनट रिविजन इन सेंस ऑर्गन चैप्टर. आई के डिसऑर्डर्स, एंड द ईयर के पार्ट्स और उसके फंक्शंस. ऑब्वियसली पार्ट्स बोलता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑल्सो. द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर, द इनर ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, द नर्व इम्पल्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स. आता है भाई बायो, हाँ ठीक है ना. ईयर पार्ट्स एंड द फंक्शंस. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज, वन सेकेंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. For tomorrow's paper, reproductive system में very important we are going to talk about is the menstrual cycle. Yeah, the menstrual cycle is very important for tomorrow's paper. And the last के 2 pages, I think वो उसमें sperms के बारे में है. So that you're going to do it for tomorrow's pages. And I'm just writing last 2 pages from the textbook. Okay. The next is evolution, human evolution. चलना भाई. एवोल्यूशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना. फॉर एग्जाम्पल आई गेस ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, उसके बाद आता है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस के बाद कौन आता है, चल बता, निएंडरथल मैन. तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख, ठीक है ना. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उसके ट्रेड्स तो याद रखने, बट सबसे इंपॉर्टेंट इज देयर क्रेनियल कैपेसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. क्रेनियल कैपेसिटी is what I want you to remember, and their height, बस. Okay, उसके बाद the next chapter is population. Okay, population में what all I am expecting, it's a hardly a 2 to 3 mark chapter. Population में terminologies are very important. Terminologies मतलब वो था ना, natality, death rate, yes, fatality, then the growth in population, then ऐसे जो भी है, census. Okay, all those definitions or terminologies I want you to by heart it. That's very important for tomorrow's exam. Terminologies, exactly. And बस इसके अलावा I want you to remember the contraceptive methods. बस contraceptive methods में pill है, okay, फिर copper tea है, etc. and all, right? And the last chapter, pollution. Pollution not that important though. Okay, एक diagram based question is what we are expecting. Simple, वो noise pollution जैसा था ना वो. इसमें खाली याद रखना the nuclear blasts which have taken place. Nuclear blasts, वो Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki, etc. That's all I want you to remember. And स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान. So these are the things which I am, thoda positive, optimistic about tomorrow's paper, right? Go through this and thank you for listening to me. All the best for tomorrow's exam, guys. God bless. I'll bless you.